बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव में आप सभी का। और मेरी लाइव चालू हो चुकी है। प्लीज़ आप लोग जुड़िए और कमेंट करिए, लाइक करिए। स्वागत है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कहाँ कहाँ से देख रहे हो सब लोग। हाय भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया मेरे लाइव में जुड़ने के लिए। और बताइए भैया आप कैसे हैं? प्रमोद भाई, और बताइए आप। रोकेगा। प्रमोद भैया आप बताइए कैसे हैं? पापा का मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं सब लोग। अब कम बा मेरे कैसा खत्म एक कोई फर्श पे बाहर जाए जाए लौटत है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए भाई।
सो जा चुके उड़ के। आवाज में सो जाते तो नहीं। ग्यारह मिनट रह गए, कमेंट क्या होते नहीं है। थैंक यू लाइक करने के लिए, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट कर दीजिए। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। और बताइए आप कैसे हो। और बताइए अमित, कैसे हैं आप। बहुत अच्छी बात, आज ठीक ठाक हैं आप, मुझे खुशी हो रही है। क्या हुआ। किसी गैस मशीन लगाना है ना, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह के यहाँ मैं ठीक हूँ। बताइए क्या कर रहे हैं आप। थैंक यू विजय भैया। ठीक है भैया, आप खा लीजिए। ठीक, मैं भी आ रही हूँ, खा लूँगी रोटी आपकी। विजय भाई, और आप कमेंट करिए।
लिख कर भेजे थे। अच्छा, सब बढ़िया है भैया, अपना बताइए। भैया आप लाइक कर दीजिए। विजय भाई, भैया आप कहाँ से हैं विजय भैया? थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। अच्छा अच्छा भैया, आप बिहार से हैं, पंजाब में रहते हैं। अच्छा भैया, तो अभी इस समय आप पंजाब में हैं? इसके पहले शायद आप मेरे लाइव में जुड़े थे एक बार। मुझे याद आ रहा है। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। हाँ भैया आए होंगे। शायद आप अपनी डीपी बदल दिए हैं क्या? क्योंकि डीपी से ज़्यादा पहचान आता है, नाम तो मतलब नाम के तो बहुत लोग आ जाते हैं। और आपने पंजाब बताया तो मुझे याद आ गया कि आप मेरी लाइव में आए थे। तो क्या कर रहे हैं भैया इस समय? आप भोजन कर रहे हैं? खुशबू सिस्टर आई हो तो कमेंट करिए। जी हाँ हाँ, बराबर याद आ गया। सही बात है आप। भैया अभी वो लेटे हैं, सो रहे हैं पापा जी। तो आपकी डीपी पहले भी यही थी भाई? हाँ, डीपी तो वही लग रही है मुझे, कबीरदास वाली। क्या करते हैं भाई पंजाब में आप? हाँ भैया, दिख गया मुझे। तबीयत तबीयत सब ठीक है भैया आपके? अमित जी क्या कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा भैया, पेपर मिल में काम करते हैं। तो अभी इस समय छुट्टी है? अच्छा अच्छा, मेरी आदत नहीं है इसीलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी भैया कह के बुलाती हूँ। भैया एक चीज़ दे दो, भैया वो चीज़ दे दो। ठीक है चलिए, मैं बेटा ही बोलूँगी। तो विजय भाई आप रोटी खाने बैठे हैं? अच्छा अच्छा भैया, दिन में काम पर जाते हैं तो अभी छुट्टी हुई होगी आपकी ना? हाँ जी। बाकी फैमिली वाले भैया सब ठीक हैं? अमित बेटा आप क्या कर रहे हो?
कहाँ से करने जा रहे हो और कौन कर रहा है आपका? बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया, आप आने के बाद खाना बनाए उसके बाद आप भोजन कर रहे हैं। क्या करोगे भाई, बाहर रह के करना पड़ता है सब काम। मम्मी पापा सब ठीक हैं? अमित बेटा, कहाँ से करने जा रहे हो बताइए, और कौन आपका करा रहा है? आज तुम कुछ खुशी वाली बात कर रहे हो। तो भैया भोजन कर लिए हो, कब करने जा रहे थे? हर हर महादेव दीदी, हर हर महादेव। और बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ दीदी, भोजन हो गया है आपका? अच्छा, तो किसने दिखाया आपको? वही तो मैं पूछ रहे हैं, कौन करा रहा है आपका? अच्छा भैया, भोजन कर लिए? चलिए ठीक है, भोजन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आराम करिए भोजन करने के बाद। अमित बेटा, कहाँ से आपको एमपी में पहुँच गए? आप तो बड़ोदरा से हैं, तो एमपी में कैसे जा लड़की मिल गई आपको? अच्छा अच्छा दीदी, आपका ही बढ़िया है, आराम से लेट जाओ, उसके बाद कमेंट करिए। विजय भैया, मम्मी पापा आपके ठीक हैं? अच्छा अच्छा, चलिए भैया, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात आपने बताया। लेकिन आप हॉस्टल में रहते हैं, तो शादी करके कैसे रखेंगे उनको? कहाँ लेके रहेंगे? सीमा दीदी, और बाकी सब ठीक हैं? लड्डू आपका ठीक है? अच्छा अच्छा, मंदिर जाएंगे आप? हाँ वो तो ठीक है, मंदिर से आप कर लेंगे, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि मतलब आपके जैसे घर नहीं है, तो आप कहाँ रहेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ। और बहुत अच्छी बात है। राधे राधे सिस्टर, राधे राधे सिस्टर। खुशबू बहन, और बताइए। आपका कमेंट आया तो पहले ही न्यारा हो गया सबसे। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। विजय भैया, आप सो गए क्या लगता है? क्योंकि भोजन हो गया है ना, तब बिस्तर पाए होंगे तो सो ही जाएंगे। चलिए, ठीक ही रहना चाहिए।
जो लोग कमेंट नहीं किए हैं कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सॉरी कमेंट बोल रही हूँ। और अमित बेटा बताइए, ऐसे बढ़िया बढ़िया समाचार बताते रहिए। भोजन कर लिया? खुशबू बहन भोजन हो गया आपका? अच्छा अच्छा हो गया, अच्छा। हाँ दीदी मेरे बच्चे सो गए। आज लड़के को थोड़ा तकलीफ़ है इसके लिए और सो रहा है। और बताइए खुशबू बहन, परी कैसी है? विजय भैया आपका कमेंट नहीं आ रहा है। थैंक यू भाई। कमेंट मेरा बंद हो गया था इसके लिए नहीं दिखा, अब आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सिर दुख रहा है, मत करिए कमेंट, कोई बात नहीं। तो आपको आराम कर लेना था ना। चलिए कोई बात नहीं, लाइक कर दो उसके बाद आप आराम कर सकती हैं। दुख रहा है तो ज़रूरी नहीं है मोबाइल चलाना। ज़्यादा दुख रहा है? हाँ ठीक है। ज़्यादा तेज़ दुख रहा है क्या आपका? ठीक है भैया कर लो, क्यों नहीं करोगे? अच्छी बात है ना, आप अकेले हो तो शादी कर लो, आपका सहारा बन जाएगी ना। हाँ सिस्टर। तो मत करिए ना कमेंट, मत करिए, कोई बात नहीं है। और आप सो जाइए, आराम कर लीजिए। अच्छा अच्छा, होता है। अभी तो इस वक्त मैं थोड़ा ठीक रहती हूँ। इसके पहले अभी ज़्यादा नहीं, साल 6 महीने के पहले मैं एक मतलब 10 मिनट का भी वो नहीं देख पाती थी, इतना ज़्यादा मेरा दुखता था। तो टेंशन की वजह से है, आप इतना टेंशन मत लिया करो, क्योंकि मुझे भी बहुत टेंशन रहता था। कोई बात नहीं, आपको पसंद है कर लो ना।
और वैसे भी आप अकेले हो, चाहे आज करो या कल करो, करना आप ही को है, कर लो आप। अच्छा, नहीं आपका दुख रहा है ना, तो मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि मतलब मोबाइल सामने रख के और करेंगे तो और दुखेगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन तेज़ रहती है ना, तो डायरेक्ट आँख पे जाती है। स्क्रीन आप धीम कर लीजिए उसकी। थैंक यू बेटा। हर हर महादेव दीदी, हर हर महादेव। थैंक यू सिस्टर। हाँ सिस्टर, सब ठीक है। मुझे तो आज ठीक है, बस आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा दीदी। थैंक यू बेटा। ठीक है दीदी, जुड़े रहिए। अभी नहीं गा सकती हूँ बेटा, चूँकि बगल में सब सो रहे हैं ना, और पापा की तबीयत भी नहीं ठीक है, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है। वो जग जाएंगे फिर। उनको 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, पेट दुख रहा है उनका। दिन में आप आइएगा 1:30 बजे की लाइव में, तो मैं आपको गाना सुना दूँगी। ओके, आप तो दिन में नहीं आते हो ना। दिन में मेरी 1:30 बजे से लाइव चलती है, आप आइएगा तो मैं गाना सुनाऊँगी आपको। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे लाइव में। धन्यवाद मेरे लाइव में जुड़ने के लिए। राम राम भैया, और बताइए। मान सिंह भाई, और बताइए आप कैसे हैं। नमस्ते भैया, राम राम भैया। किसको आप पूछ रही हो? नाम मतलब नाम डाल दिया करो तो समझ में आए। वो तो वही अमित, तो वही है जो बता रहे थे वो चीज़। हाँ भैया, और सब ठीक है।
वो तो भाई बड़ौदा हैं जिसके मम्मी पापा नहीं है, गेम चेंजर जो है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मान सिंह भैया, और आप कमेंट करिए, आपका भोजन हो गया कि नहीं हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सिस्टर, मेरे लिए चाय आ गई। अमित बेटा इतना इमोजी मत भेजिए, नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में भेजा करिए लेकिन लगातार इतना ज़्यादा नहीं। थैंक यू, थैंक यू अमित। लिख कर भेजिए, और मतलब इतना ज़्यादा मत भेजिए इमोजी। हाँ मैं तो देख रही हूँ, मेरे लिए चाय आ गया। आप भी पी कि नहीं पी? और तनु क्या हो रहा है? मानसिंह भैया आप चले गए क्या? अच्छा अच्छा, किसको बोली थी? अच्छा, लेटने जा रहे हो? अच्छा। अमित बताइए, आपका भोजन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, हो गया। अमित नहीं। अच्छा, उनको आप बोली थी? क्या बोली, मैं नहीं देखी। हाँ तो इनको मैं अभी नहीं पहचानी, मतलब अभी मैं पूछ रही थी तो ये चले गए ना मानसिंह भैया। मैं इनको नहीं पहचान रही हूँ। अभी ये लग कमेंट से चले गए तो कैसे मैं पूछूं? अच्छा अच्छा भैया, मेरे गीत अच्छी लगी सुनने के लिए थैंक यू आपको। लॉन्ग वीडियो सुनना करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल दोपहर में आइएगा आप मेरी लाइव में, मैं आपको गाना सुनाऊंगी। अभी सो रहे हैं और मतलब तबीयत भी नहीं ठीक है, फिर अभी जग जाएंगे वो तो मुझ पे चिल्लाएंगे। तबीयत अभी ठीक होती तो कोई बात नहीं। आप जानती हो क्या सिस्टर उनको? राम राम तनु, राम राम तनु। हाँ बेटा, कल आपको सुना दूंगी, 1:30 बजे आना मेरी लाइव में, मैं आपको सुना दूंगी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय राम। हाँ मैं खाना खा ली हूँ। आप खाए हो कि नहीं? हाँ मौसत सो रहे हैं आज, तबीयत उनकी ख़राब है थोड़ा, 2 दिन से।
आज मैं खाना में सब्जी रोटी बनाई थी भैया। अच्छा सिस्टर। आप अभी नहीं खाए होंगे ना अमित जी? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात, आज आपने पनीर खाया। हाँ, मतलब थोड़ा बुखार है, उनके पेट में दर्द है और 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रहे हैं। थोड़ा से एक या दो रोटी खा लेते हैं बस। जीजा की आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज बेटे की तबीयत भी थोड़ा अभी से तुरंत पता नहीं कैसे अभी आधा घंटे के अंदर अचानक तबीयत खराब हो गई। अभी तो रात है, अब कल लेके जाऊंगी इनको भी। दोनों बाप बेटे की तबीयत खराब हो गई है। तनु और बताइए, कमेंट करिए। अमित और बताइए, कमेंट करिए आप। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए, 1 घंटा हो जाए मैं बंद कर दूं फिर, क्योंकि सिस्टर की भी तबीयत नहीं ठीक है और जब तक मैं रहूँगी तब तक वो रहेंगी तो फिर उनको तकलीफ़ होगा ना। बच्चे मेरे सो रहे हैं बेटा, मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा वैसे। देखो, ये लड़की नीचे करके है बेटा, ऊपर सिर कर। ये नहीं दिख रहा है ना? देखो, ये जीजा वो सो रहे हैं। देखो, नहीं दवा आया है, दवा तो परसों भी लाए थे, कल भी गए थे। हाँ बेटा, आपका भाई है। इसकी भी तबीयत खराब है, आज नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, मुख से सांस ले रहा है।
हाँ, अभी तो मतलब आपके भाई की तबीयत अभी आधा घंटे पहले ख़राब हुआ, तो उनका तो नहीं आया है। बट अब आपके पापा का तो दवा आ रहा है, 2 दिन से दवा आ रही है उनकी। अब इनके लिए कल लेके आऊँगी। खुशबू बहन, आपको दिक्कत होती होगी तो आप ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है, ये सोच रहे हैं कि 1 घंटा हो जाए फिर बंद कर दूँगी, और नहीं तो मैं साइड में सो जाऊँगी, मोबाइल ऐसे चालू पड़ी रहेगी। हाँ बेटा, हॉस्पिटल ले जाऊँगी, कल सुबह लेके जाऊँगी। खुशबू बहन, आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप मत कमेंट करिए, क्योंकि सिर भी दुख रहा है आपका और आपके आँख से पानी भी गिरता है ना। आँख से पानी ज़्यादा गिरता हो तो एक ड्राफ ले लीजिए, और जक्सन डी उसका नाम है, बहुत बढ़िया ड्राफ है वो। तनु लाइक कर दो। मम्मी कैसी है तनु? उसको आज पता नहीं क्यों जुकाम तो नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन उसकी मतलब आज सांस फूल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, सर्दी पकड़ ली है। तनु कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए। गुड नाइट बेटा, बाय बाय। अच्छा ठीक है मम्मी। सो रही हैं? थैंक यू सिस्टर। अच्छा, लाइक किए हो, दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, पहले तुरंत दिख जाता था, अब दिखता नहीं है। अच्छा, मम्मी देख रही हैं। आयुषी, बाय, गुड नाइट। हाँ ठीक है, जाइए आप।
ओके। थैंक यू सिस्टर, जाइए आप सो जाइए। मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों अभी इतना ज़्यादा नींद आती है। आधा घंटा हुआ लाइव चालू किया, लेकिन बहुत आ रही है। हाँ, सोच तो रही हूँ ना, वही 1 घंटा पूरा हो जाए। सुबह 4 बजे की लाइव अच्छी रहती है। अबे 10 नहीं बजा है। अच्छा, आयुषी नानी के यहाँ है। जब ज़्यादा लोग रहते हैं, फटाफट कमेंट आता है, तब नींद नहीं आती है। चार बजे नहीं, 5 बजे चालू करती हूँ। 5 बजे जब उठ जाती हूँ तो चालू करती हूँ। रंगड़ रंगड़ करती है दीवाना दूंगा, हिंदुस्तान की रानी तुझको मैं बना दूंगा। प्लीज़ कमेंट करिए, और लोग भाई जुड़े हो लेकिन लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं।
लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव सीमा दीदी, हर हर महादेव। मैं तो समझी कि आप सो गई दीदी, लेकिन आप अभी हैं। मैं समझी कि आप सो गई हो। कमेंट लेट जा रहा है, रुको मैं देखती हूँ। हाँ आप बोली थी, लेकिन मतलब आप, मैं सोची कि देख लेटे लेटे नींद आ जाती है ना। कमेंट लेट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ब्लॉक्ड वर्ड। चलिए अब कल तुम्हारे मौसा रहेंगे तो देखेंगे कितना लेट आता है। वो किए थे 5-6 सेकंड का, लेकिन अभी पता नहीं कैसे हो गया और कहाँ से मिला था। मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, करते रहो कमेंट, थोड़ा लेट आएगा और क्या। तनु कमेंट करो, चली गई हो क्या?
हाँ, खुशबू चली गई, उनका सिर दुख रहा था तो मैं बोली आप जाइए आराम कर लीजिए, और वो चली गई। फिर उनका सिर दुख रहा था। हाँ दीदी, सब ठीक ठाक है। बच्चे की तबीयत ख़राब है थोड़ा आज बस। अच्छा, तो तनु कमेंट करते रहिए, कुछ न कुछ लिखते रहिए। राधे राधे, राम राम, सीता सीता, हर हर महादेव, कुछ भी लिख कर भेजते रहिए। चलो ठीक है तनु, अब मैं जा रही हूँ सोने। लाइव मेरी ऐसे चालू रहेगी। दीदी, सीमा दीदी, आप भी जा सकती हैं, मुझे नींद बहुत आ रही है और मैं अब सोने जा रही हूँ। नहीं, अभी दवा नहीं दिलाई हूँ। उनके पापा की दवा आई है, उनकी दवा नहीं आई है अभी। थोड़ा अभी खाना खाने के बाद तबीयत ख़राब हुआ है, आधा घंटे से, पता नहीं क्यों अचानक। तो अब इतनी रात को कहाँ जाऊँ, सुबह लाऊंगी। घर में थोड़ा रखी थी, उसी को खिला दी हूँ, सुबह लाऊंगी दवा। ठीक है दीदी, अब मुझे नींद आ रही है, अब भी जा सकती हैं और लाइव मेरी चालू रहेगी। मैं बैक कैमरा करके जा रही हूँ सोने। बाय बाय। तनु, अगर जागते रहना तो कमेंट करते रहना, सो जाना तो कोई बात नहीं। बाय दीदी, गुड नाइट। कुछ भी लिख कर भेजती रहो, राम राम, सीता राम, जय जय राम, कुछ भी लिख के भेजो। नहीं आता है यम 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 यान 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 यान, कुछ भी ऐसे लिख कर भेजती रहो बस। खाली जब तक जागती रहो और सो, नहीं तो फिर नींद आए तो सो जाना।